Hello. I hope I'm audible. Hello, everyone. I think today we're going live for the match and we'll be live for yet another Arsenal game. Sorry, Arsenal game. They're playing against Brighton. मैंने अभी तक वो लोग के लाइनअप चेक नहीं किए. We'll do that in a minute, but before that, let me check the audio. Audio important है. Okay. Benkai. Currently 0 viewers. अच्छा ठीक है बढ़िया है. Okay. Uh, just so you know, uh, the last time I wore this jersey was when Arsenal were playing against Bayern Munich. I think like 2 seasons ago, if I'm not wrong, and we were losing. Maybe I don't know, like 2-1, and then Trossard. No, was it Trossard? Yeah. Trossard came in and scored that goal against Bayern Munich. So उसके बाद से मैंने ये जर्सी पहनी नहीं है. अगर अगर बाय चांस अगर हम लोग एक गोल स्टार्टिंग में कंसीड करते हैं, so I'll probably change it. So be ready for that too. Okay, अब बहुत कुछ कवर करना है आज के गेम में. And right before that, need to check one thing. Whoever the viewer is, can you please say hi? Nice jersey, thank you. Yeah, number one fan is here. Who's the other viewer? If you can just say hi. No, you've said it. There are two viewers. So lineup check करते हैं क्या है. Before that, वो भी check करना है. यार जल्दी से जल्दी यार थोड़ा व्यूअर्स बढ़ जाए. व्यूअर्स ही नहीं आ रहे. ओके, लाइनअप चेक करते हैं. योकरेश नेली. ओ नेली, नाइस. ओ आई थिंक नेली को खेलना चाहिए ये गेम. ट्रोसार्ड लास्ट फ्यू गेम्स में थोड़ा कंट्रीब्यूट कर रहा है, बट इज नॉट असिस्टिंग और स्कोरिंग गोल. तो मे बी मार्टिनेली को चांस देना जायज़ से. इजी ऑफ कोर्स. ओडेगार्ड प्रोबेबली इज इंजर्ड. साका, राइस, जुबी, इनकापी, मस्केरा आया. पहले पता था साका अपना से इसका सलीबा का प्रॉब्लम्स है. थोड़ा लॉन्ग टर्म है उसका, बट स्टिल उसको सर्जरी पे जाना चाहिए था. That's been compromised. टिम्बर एक है. राया ओके. सब्स्टिट्यूट में कौन है? Norgard, Trossard. Oh, Dauman. Let's go. Dauman. The next big thing. Max Dauman. Kai Havertz. We're here. Jesus.
स्केली, मैड्यूके, केपा, कैलाफियोरी। भाई मेरे को मैं बहुत स्पीचलेस हूँ विद what's happening with कैलाफियोरी. आई होप एवरीथिंग इज फाइन. आज ये स्ट्रीट में lot to cover, by a lot to cover. How confident are you for this game? I'm not confident. I'm not confident at all क्योंकि I remember ये हमारे every season का एक ये होता है टेस्ट होता है, टेस्ट गेम अवे ब्राइटन, and we failed like so many times. ठीक है, so I don't know, maybe, but I think इसीलिए तो मतलब चैंपियंस बोलना चाहिए वो लोग को. फॉर लाइक अगर वो लोग को चैंपियंस बनना है तो दे हैव टू गो थ्रू दिस, और एल्स देयर इज नो पॉइंट in calling yourself the champions. Simple as that. uh there are a lot, like there's a lot to talk on this. मैं बस सोच रहा हूँ कैसे स्ट्रक्चर करूँ, और जो मैं बात करूँगा उनके रील्स बनाऊंगा, आई होप. And yeah, whoever is listening to this, please, मेरे को मिलियन सब्सक्राइबर्स, मिलियन फॉलोअर्स नहीं चाहिए. मुझे 100 बंदे लोग चाहिए जो मेरे को 10 प्लेयर्स प्रोवाइड करे. आई एम प्रिटी श्योर दोज पीपल कैन हेल्प मी become good football agent, and also I can help them become a better player. So subscribe, yeah, subscribe karo. But if you're like a genuine person with query related to football, do let me know. Do join this live stream. Okay, start. Okay. आई एम नॉट लाइक अ रेगुलर स्ट्रीमर जो रिएक्शन पे फेम मिलेगा. मुझे नहीं चाहिए इतने सारे सब्सक्राइबर्स. मुझे चाहिए 100 जेन्युइन लोग जो मुझे 10 फुटबॉल प्लेयर्स ला के दे, यंग फुटबॉल प्लेयर्स ला के दे. आई वॉन्ट टू रिप्रेजेंट देम, आई वॉन्ट टू हेल्प देम, एंड आई होप आई होप दे मेक दिस चैनल प्राउड. मेरा तो बहुत दूर दूर तक वो लोग से नाता लेना देना नहीं चाहिए, बट I hope I hope one day this channel will be more than one. This channel will be more than something. और सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है जो it's like it's like a skill now. A lot of corporations are there to lot of corporations out there, they want people with social media skills. और like वो जमाना चेंज हो गया है जो सोशल मीडिया अभी नॉनसेंस चीज़ों के लिए यूज होता था. नाउ it's it's like an asset. You have to use it wisely. You have to be careful with it as well. And I think whenever I'm not careful with it, do let me know. Even I'm here to learn. Okay. Okay, so वो गया गोल. ओ भाई गैब्रियल, ये क्या है राया? नहीं नहीं राया. Whose fault was it? I don't think. Raya, come on. ये सब नहीं यार. Gabriel to the rescue. But that was like the worst chip ever. ये हम लोग हाई स्कूल में मतलब जो हम लोग प्रैक्टिस करते थे ना चिप मारने का, जो स्कूप करने वाला, वैसे बालेबा ने स्कूप किया है. Like, come on. थोड़ा यार, you guys are like Premier League superstars. Okay, there's a corner here for Brighton, an early corner. Ooh, very wide, of course.
जो ब्राइटन का मैनेजर है, he did complain about uh, like Premier League becoming too defensive, with the set pieces and all. Let's see कितना flow खेलता है. They're playing home, so I do hope कि वो लोग ज़्यादा possession रखे. Maybe नहीं, I don't know, maybe नहीं, but the number of chances they create should be substantial, or like equivalent to Arsenal's. डेविड राया ओवररेटेड? अरे भाई, ओवररेटेड नहीं है वो. लास्ट गेम देखो उसका चेल्सी के अगेंस्ट. डेविड राया इज नॉट ओवररेटेड. उसका लास्ट गेम देखो भाई, तुम्हारा नैरेटिव चेंज हो जाएगा पूरा. हाँ, उसका एक प्रॉब्लम है, लॉन्ग शॉट्स ही टेंड टू कंसीड इट, बट आई एम श्योर he's working on it as well. So let's see. अगर आप पूछो रैम्सडेल और इसमें क्या डिफरेंस है, रैम्सडेल और डेविड राय में क्या डिफरेंस है, वो दोनों में डिफरेंस एक ही था. आर्टेटा चाहता था कि जो रैम्सडेल है वो सेंटर में पासेस ज़्यादा देते रहे, और वो थोड़ा घबराता था रैम्सडेल. एंड there's a reason why राया रिप्लेस्ड हिम. राया डिड इट सो effortlessly कि मतलब he became the number one goalkeeper for Arsenal. भाई मेरे को जुबिमेंडी से होप है ये गेम में, प्लीज. जुबिमेंडी, मतलब प्लीज अगर स्कोर करे तो बहुत अच्छा है जुबिमेंडी, क्योंकि कॉन्फिडेंस का गेम है उसका पूरा. व्हाट अ बॉल फ्रॉम इजी साका. अरे ये क्या बॉल था ये, राइट. ओह गॉड, साका एंड हिज राइट फुट इज लाइक, मैं इमेजिन नहीं कर पाता. He still needs to improve his right foot. बट हाँ, अगर वो 6 यार्ड, मतलब 6 यार्ड की डिस्टेंस पे है तो वो जस्ट बैंग करता है, लाइक दैट वो गोल चला जाता है, ना तो है. What is something Arsenal need to work on? We need to work on our set pieces. uh, we get like 5-6 set pieces on average, and we're not scoring in all of them. Okay, jokes aside, um, Arsenal should work on their finishing. इतने मतलब अच्छे चांसेस क्रिएट करने के बाद भी अगर हम लोग वी नॉट फिनिशिंग, वी नॉट कन्वर्टिंग दैट इनटू अ गोल, देन देयर इज नो पॉइंट ऑफ एनीथिंग. हम लोग का पहले से वही रहा है भाई प्रॉब्लम, मतलब फिनिशिंग ही रहा है. विथ योकोरेस, विदाउट योकोरेस, प्रॉब्लम वही रहा है. अरे ये कौन सा फाउल है भाई, योकोरेस को उसने पुश. अरे यार ये उसके रेफरी का नाम भूल जाता हूँ मैं. मार्टिनेली बहुत पैक्ट किया है उसको. ओके ओके, सिटी खेल रहे कि नहीं आज? वो लोग भी मैटर करते हैं कि वो लोग खेल रहे कि नहीं. सिटी आर नॉट प्लेइंग. ओके, दे आर प्लेइंग अगेंस्ट नॉटिंघम फॉरेस्ट. चलो बढ़िया है, बट दे आर प्लेइंग होम. आई होप वो लोग का ड्रॉ हो जाए. जूबी मेंडी को थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा. व्हाट अ बॉल, थोड़ा ज़्यादा था इजी से, बट या इज ट्राइंग. गुड गुड गुड, इजी. लेट्स गो.
Did Arsenal fans have more expectations for Victor Gyökeres? Yes, we did. क्योंकि आप अगर देखो उस हमारे जो आने से पहले वाला सीजन उसका when he played for Sporting, golden boot था if I'm not wrong. So he did score goals. So मुझे नहीं पता गोल्डन बूट मिला है उसे तो आई वी वर एक्सपेक्टिंग lot many goals than he scored currently और बहुत कम मारे उसने बट हाँ प्रीमियर लीग इज नॉट फॉर गोल गोल साका लेट्स गो साका आई थिंक इसका फॉल्ट था कीपर का फॉल्ट था बट या वी टेक दैट ओ every time people talk about us scoring only set pieces, here it is. We do score normal goals, regular goals, open play goals. Okay, देखो साका को जरूरत थी ये गोल की और उसने मारा है and I'm so happy for him. Star boy should be scoring in each and every game, if not at least assisting in each and every game. अरे रे क्या आई थिंक नटमेग गया गोलकीपर के ओह इट वाज अ डिफ्लेक्शन फ्रॉम ब्राइटन प्लेयर और फिर नटमेग भी गया व्हाट अ फनी गोल टू कंसीड भाई ओह गॉड चलो we take that we don't care Chelsea losing against Villa भाई हम लोग मेरे को फर्क ही नहीं पड़ते ये सारे गेम्स मैं क्या करूँ ये लोग का मतलब क्या करूँ जान के कि दिल स्कोर क्या करूँ ये लोग बॉटम हाफ ऑफ द टेबल मतलब सॉरी बॉटम हाफ नहीं बट they're not contenders. Villa was a contender. I used to regularly check their score lines, but at this point, I don't think they are competing for the title. It's just us and City. Why is Saka not getting the numbers of goals and assists he should ideally be getting? बीच में वो इंजरी आया था उसका and maybe because of that, I think and वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम था उसके लिए ओके मिटवा Oh, a tackle of the century by Gabriel himself. So yeah, why is Saka not getting the number of goals and assists he should ideally be getting? वो बीच में आई थिंक अगर कोई भी सीजन को इवेल्युएट करना है तो अ, अच्छा बुरा तो हो मतलब वो तो एक मेट्रिक है ही बट इंजरीज अगर जिसको आ गई वो सीजन मतलब थोड़ा अप्स एंड डाउन्स होता ही है किसी के भी एक माइनर इंजरी फिर भी इट्स बेरेबल बट अगर कोई मेजर इंजरी 1-2 महीने के लिए बाहर जा रहा है तो यू 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 डोंट नो कि हाउ 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 वेल दैट प्ले विल प्ले आफ्टर रिटर्निंग सो वो प्रॉब्लम हुआ एंड देन अगेन मैड्यू के जॉइनिंग इन ही इज नॉट प्रोड्यूसिंग नंबर्स बट आई थिंक जो उसका इम्पैक्ट रहा है ऑन द फील्ड इट ऑल्सो intervene with like someone's confidence in this case Saka so वो भी एक मैटर करता है थोड़ा प्रेशर लेना like you know now Arsenal have two right wing true proper right wingers पहले नवारी फिर और 2-3 थे मतलब जो मतलब साका को रिप्लेस नहीं कर सकते थे ना मैड्यू के हैज दैट पोटेंशियल इज यंग वर्सेटाइल है वो वी कैन मतलब तो साका के पास वो एक दिमाग में रहा होगा कि यार बट अगेन ओके गुड बॉल फ्रॉम इजी अरे यार मार्टिनेली यार मेरा रक्त रक्त ले रहा है मार्टिनेली भाई मार्टिनेली का भी स्कोर करना चाहिए भी जुबी मेंडी रिलीज द बॉल क्विकर भाई डोंट थिंक टू मच
Okay. Is Liverpool getting top four? Of course, by top four, ne, I think top five है इस बार, like usual, top five. Top four भी आ सकता है. If you're talking about playing in the Champions League, I think Liverpool will get into the Champions League, but they lost yesterday. और मैंने मैच देखा यार. But I would be very pissed at the players क्योंकि वो लोग मतलब पूरी टीम अच्छा खेलती है और लाइक बिकॉज ऑफ फ्यू प्लेयर्स आई डोंट वांट टू नेम देम बिकॉज ऑफ फ्यू प्लेयर्स वो जो मेन प्लेयर्स है वो लोग मतलब डिलीवर नहीं कर पा रहे तो आई वुड बी पिस्ड बट अदर देन दैट they are lacking that top players Isak and what's his name words so it's understandable कि वो लोग they're having a bad season और ट्रांजिशनल स्क्वाड तो नहीं है बट लाइक मेरे को लगता है जिस दिन वर्ड्स चमक गया जिस दिन वर्ड्स अच्छा खेलने लग गया कॉन्फिडेंस से आई थिंक लिवरपूल विल बी अनस्टॉपेबल वर्ड्स प्लेइंग गुड फुटबॉल इज द की फॉर लिवरपूल्स रिवाइवल और कुछ नहीं इसाक इज लाइक ही इज अ स्ट्राइकर तो वो लोग उसको प्रोवाइड करोगे तो स्कोर प्रोवाइड करने वाले अगर बैठे रहेंगे तो यू डोंट नो Jokeris or Isak? That's a good question. Before the season, I wanted Isak so badly, but मेरे को पता था कि Arsenal would never spend 150, 120 million on any player. And Liverpool is a team that can spend that much amount. And I don't know if Isak really wanted to uh, join Liverpool or not, but बाद में जब ट्रांसफर इनिशिएट हुआ तब पता चला कि इसाक को चाहिए था वो ट्रांसफर बट was too late दैट्स व्हाई वो थोड़ा सागा हो गया बट एज एन आर्सेनल फैन आई डू लाइक योकरेस irrespective of his form right now बट अगर सीजन के पहले बोलते तो जो मिकेल आर्टेटा के जो स्टाइल को सूट करता बेटर वो था इसाक प्रीमियर लीग प्रूवन भी था बट अगर वो उसको क्या बोलते हैं इंजरी भी मतलब गलत टाइमिंग पे आई दैट प्राइस टैग फिर इंजरी लाइक फिर ड्राउट गोल ड्राउट वो पूरा कॉन्फिडेंस पे उस पर इम्पैक्ट किया और लाइक he's a good player he's a very good like top player I would say to have in anyone's team but he like वही तो है like if Isak is a player जो कोई भी टीम में फिट आ सकता है he can replace anyone Real Madrid गया he can replace anyone Barcelona गया he can replace Lewandowski as well like अगर वो I don't know I'm not watching the game but अगर वो स्ट्राइकर है तो किसी को भी कर सकता है that kind of player Isak is बट रही बात योकोरेस अरे यार सही बंदा है योकोरेस आई लाइक दिस डूड जेन्युइन लगता है मेरे को उई बाय क्या ही था ये शॉट लिया बट उसी के प्लेयर ने ब्लॉक किया वो उन्हीं के प्लेयर ब्राइटन के प्लेयर ने ही मतलब ब्लॉक किया वाओ ये भी आर्सेनल पे ब्लेम करेंगे ये लोग राइवल फैंस आर लाइक पैथेटिक
not pathetic, but they just can't see. They just can't seem to comprehend us as title, like as champions. They just can't seem to even imagine as champions. Narratives तो बहुत रहती है when Arsenal are winning, losing. Like if we lose, Arsenal will still be bantered. If we win, Arsenal will still be bantered. ड्रॉ तो छोड़ ही दो भाई, हम खुद बैंटर करते हैं फिर. Okay, Brighton are having more possession, also more attempts than us as expected. थोड़ा गेम प्ले हमारा वैसे होना चाहिए. सेटबैक काउंटर पे आई थिंक हम लोग पूरा काउंटर पे रिलाई होने वाले ये गेम में फिर जिस तरह से इजी बॉल डाल रहा है. ओके, गुड गुड टैकल, इजी. बट जो सोशल मीडिया पे नैरेटिव सेट है ना कि आर्सेनल शुड डोंट डिजर्व टू इवन विन द चैंपियनशिप. आर्सेनल डोंट डिजर्व टू विन द प्रीमियर लीग. ये थोड़ा मतलब अभी आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है. मतलब everyone are complaining about us scoring from corners. अरे यार, कॉर्नर्स बनाए गए हैं स्कोर करने के लिए, ये भी तो देखो. तुम लोग मतलब किस लाइक तुम्हारे आर्ग्यूमेंट पे बेसिस ही नहीं है. और आई वुडंट से कॉर्नर्स आर प्योर लक. एट दिस पॉइंट दे आर नॉट. ये लोग जेन्युइनली ट्रेनिंग में ट्रेन कॉर्नर कॉर्नर सेट पीसेस, यू नो. So at this point you can't blame it on luck. You can't blame ki we are getting we are scoring only goals, we're winning because of corner kicks. No, हम लोग perfection में किए ये चीज and we are rewarded with that. Okay, so don't come at me with that narrative ki Arsenal don't deserve to win the league. We do deserve. Hey, we do deserve it. Or and talking about कॉर्नर्स, जो हमारे सेट पीस स्पेशलिस्ट है निकोलस होवर. अपेरेंटली ही गेट्स इन हिज कॉन्ट्रैक्ट वो क्लॉ है कि उसको बोनसेस मिलते रहेंगे फॉर नंबर ऑफ कॉर्नर्स और लाइक सेट पीसेस वी स्कोर फ्रॉम. सो मेरा क्वेश्चन वो नहीं है कि लेट्स सेड लाइक अ नोन न्यूज़ नाउ. मेरा सवाल ये है कि इफ वी कंसीड फ्रॉम अ सेट पीस, डज दैट मीन उसका बोनस डिडक्ट होने के चांसेस है? वी नेवर नो. निकोलस होवर्ड जितना हमें जानते इज नॉट लाइक आर्सेनल और not allowing him to interview, and there's a reason for it obviously. We might never know कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में है यार कि नहीं. if opponents score from a set piece against us, we will never know. मैंने कमेंट में तीर डाला है. देयर इज अ रीजन फॉर इट. मेरे को एज अ टाइम स्टैम्प यूज करना है व्हेन आई मेक रील्स, सॉरी शॉर्ट्स, यूट्यूब शॉर्ट्स.
सो मेरे को याद रहे कि यार इस चीज़ पे मैंने ये बोला है, तो वो टाइम लिखने की जरूरत थी, जस्ट टी अप. ओके, who needs to go right from an Arsenal player to win the Ballon d'Or? डिक्लेन राइस, उसका पीआर भी बहुत तगड़ा काम में आया. सो if we win it all, if we win it all, if we seriously win it all, Declan Rice. Times have changed now. Rodri won the Ballon d'Or, so and he does have a shot. और at the same time, अभी जो मैचेस चालू होंगे राउंड ऑफ 16, क्वार्टर फाइनल, सेमीज, फाइनल्स, उसमें जो कंसिस्टेंट प्लेयर आएगा उसको मिलना चाहिए, whoever that is. If that's Raya, I don't mind. वो ये स्टेजेस बहुत क्रूशियल है, ये स्टेजेस पे बहुत क्रूशियल है. इवन इफ दैट इज योकोरेज कम्स एंड स्कोर्स हैट्रिक अगेंस्ट what we playing बायर्न लेवरकुसेन, एंड देन अगेन जो भी आने के बाद हैट्रिक मार रहा है, तो लाइक गिव हिम द बैलन दो भाई. Arsenal are relying on corners as their win strategy. नहीं, I think I've explained it कि corners are meant to corners नहीं, वापस let me restart it. Arsenal are only relying on corners as their win strategy. नहीं यार, I don't think so. We do play beautiful football. If you're an Arsenal fan who's been watching since Arteta took the job, you would know like हम लोग कितना flow football खेलते हैं. But at the same time, corners are meant to be scored. If you don't score, that means you have wasted an opportunity. Simple as that. और इसके आगे कुछ नहीं बोलूँगा. And at this point, I want Arsenal to score as many corners as they can, and rage bait, like rage bait them. I don't care. Like maro, or let the noise be about, oh, so many corner kicks. Even like in the comment section, uh, win strategy. Come on, it's like we're not relying only on corners. We happen to get goals through that. Eh, okay, World Cup. Oh, World Cup. World Cup. Oh yeah, World Cup भी तो रहेगा. If हाँ, वो तो है, मैं वर्ल्ड कप भूल गया था. So we don't know, like even if England wins the World Cup, वो लोग कंटेंडर्स में, वो पीआर एजेंसीज बहुत कंटेंडर्स में डाल देगी जूड बेलिंगम को, for some reason. But again, even if England wins, डिक्लेन राइस का नाम आना ही चाहिए. And what else, but i I feel, talking about World Cup, I feel bad, and also I feel excited. That I feel bad because Rodrigo got injured, and I feel happy because maybe there's a chance for Neymar to join in. Maybe, you know, even as a substitute, whatever. Like, we need Neymar at the World Cup. Simple as that. And it's his World Cup. मेरे को उतना कहना है. So, पहले ब्रूनो गिमारिश was long term injury, long term नहीं, but yeah, थोड़ा इंजरी से इंजरी हुआ है, and now Rodrigo. Someone up there or somewhere, like is listening to someone's prayers. So we'll see about that. We'll see about that. I hope Neymar plays. I hope Neymar plays the World Cup. I hope he wins the World Cup. Neymar is the reason why I started watching football. No,
Neymar is the reason why I started playing football. Zlatan Ibrahimovic is the reason why I started watching football. That dude is like super cool. Even on my Gmail, uska photo hai for some reason, and I haven't changed it. Whenever I write emails to like anyone, they should know that I'm a big Zlatan fan, and it's like a uh, icebreaker whenever I talk or like happen to meet them personally. So it's like, no, yeah, Zlatan, yeah, like Zlatan is the reason why I started watching football. Simple as that. टैटूज थे यहाँ पे यार पूरे यार मैं बचपन में सोचता था मेरे को भी टैटूज चाहिए थे यार दैट बाइसिकल भी मारा था मैंने ऑन अ कंक्रीट broke my wrist. Ooh, Declan Rice. And yeah, I do want Neymar to win the World Cup, and I do want him to win everything like Ballon d'Or and just retire. Like that's it. He should retire uh, after winning the World Cup. Simple. Baki usme, like he need not prove anything. He has already passed on his legacy via Yamil Yamal. He need not he need not prove anyone anything. He's given to the game so much. उसकी legacy उसका game है, not his trophies, not his memorable wins, but his style of play. Right? Why I say Neymar? क्योंकि जब भी वो कुछ स्किल करता था तो आई यूज टू कम बैक. I used to go I used to practice that skill and try it on the field. That kind of legacy उसने दिया है. And it's more than trophies and all. For me, of course it's very subjective, but for me it's more than just um, winning individual trophies. Who is the player you would want Arsenal to sign now? Hmm. I want to sign. I wanted to sign Rodrigo, but I'm glad that transfer didn't go well because imagine हम लोग अभी टाइटल रन पे चारों के चारों क्वाड्रुपल रन पे और for some reason he got injured. I would be pissed. Like अगर उसका फॉर्म भी ट्रोसार्ड जितना रहा, I would be pissed. We want all our players to be fit even if they're not scoring. For some reason like हम हमारे पास होप होता है कि ये कुछ तो कर लेगा ये like in the second half or something. Apart from that, who is the player you would want Arsenal to sign now? I feel like our squad is complete, but yeah, I want Yelis, the Juventus guy. I want him so bad. भाई स्टार बॉय के साथ स्टार आएगा तो क्या तहलका मचेगा समझो यार. आई वांट हिम सो बैड बट उसने यूवेंटस से रिन्यूअल साइन कर लिया तो दैट्स नॉट हैपनिंग एनी टाइम सून. आई एम सैड. लेट मी मेक दिस वेरी क्लियर. जो राइस का जो हैंडबॉल हुआ दैट गले पे लग के हैंडबॉल गया वो हैंडबॉल नहीं था बट जो उसने खींचा था दैट वाज पोटेंशियली अ फाउल. दैट वाज पोटेंशियली अ फाउल बट फन फैक्ट द नेक्स्ट सो राया ने फिर सेव निकालने के बाद कॉर्नर मिला. द नेक्स्ट थिंग दे डिड they got a goal. So I feel it's a win-win situation. Chelsea fan, other rival fans need to stop with their agendas. Okay, just it does justify it. It just does it does justify. So you need not uh, open legal action on social medias.
ओ जुबीमेंडी इंजरी, बाप रे। अरे 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 रे 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 रे, उसने जानबूझ के मारा है भाई, ब्राइटन प्लेयर ने। So, like 2 days or yesterday, Real Madrid lost against Getafe. Think, I don't know if I'm pronouncing it right. Yeah, few days ago, Real Madrid lost against Getafe. I think 1-0, and that too at home, if I'm not wrong. Of course, red card say dono sides. I've not watched the game, but I can tell from social media the way Getafe is playing currently. They're playing ultra defensive football, and it's working out for them. They are relied on counter attacks, and the defensively they're a very very strong team. Like but yeah, they also missed Mbappe. I don't know if he will be playing against City or not. I think he shouldn't uh, let the other players contribute as much as they can, and maybe in the second leg he can come back. I want I want City to win against Real Madrid. And why? So that वो लोग के पास down the lane tougher fixtures रहे for us to compete in other competitions. Us as Arsenal fans. So like I want City. My entire vote is for City, and I do feel City will win that tie. But I also feel Real Madrid are like are a legacy club. Then वो लोग ने बहुत सहा है as a club because when they lost against Benfica, so they have a point to prove. Whoever loses, it's a good thing for both of us. Sorry, whoever wins or loses, we shouldn't care. Those two are like top teams, and a top team will be eliminated, but at the same time, a top team will also be qualified for the next round. Chelsea are okay. City scored 1-0, and Aston Villa and Chelsea are like they're also equal 1-1. Okay, what else? So आप लोग को पता नहीं होगा, एक पैटर्न है आर्टेटा का जो स्टाइल के बारे में, एक मेन पार्ट है। आर्टेटा डिलीवर्स व्हेन आस्क्ड, सिंपल। डिलीवर्स एज इन आप लोग बोलोगे कि ऐसे नहीं हो रहा है, ऐसे करना चाहिए, वो वैसे कर देगा। आप लोग बोलोगे कि कॉर्नर्स नहीं कर मारने चाहिए, वो नहीं मारेगा, बट मतलब दूसरे फॉर्म में वो गोल मारेगा, सिंपल। आप लोग बोल रहे हो कि ऐसे ऐसे, आई थिंक ही इज आल्सो एक्टिव ऑन ट्विटर, ही लिसन्स टू बैंटर एवरी नाउ एंड देन। अगर वो बोलेंगे कि अगर हम लोग बोलेंगे कि मार्टिनेली शुड नॉट बी प्लेइंग इन द नेक्स्ट गेम, वो नहीं डालेगा, सिंपल। वो मैं नोटिस किया चीज़। हम लोग बोलेंगे कि साका को रेस्ट मिलना चाहिए, नेक्स्ट नेक्स्ट गेम उसको रेस्ट मिलता है। तुम लोग कितना भी बोलो कि आर्सेनल ऐसा है वैसा है, वो तुमको सॉल्यूशन ला के देगा, एंड यू वोंट लाइक इट।
Why? Because वो करेगा क्योंकि you guys expect him to not do it, and doing it successfully that triggers you guys. याद रखना. अरे, lost the possession, good recovery from Nkapi, good tackle from Rice. Okay, good. What do you think about people comparing Neymar with Vinicius? Bye. ये क्या है? Vinicius is a good player. पहले वो नहीं बोल. I'm not doubting that. Vinicius is a very good player. But नेमार की लेगेसी उसका गेम नहीं है. नेमार की लेगेसी उसका ऑरा है. नेमार हैज अ सर्टेन ऑरा जो ये प्लेयर्स में किसी में नहीं है. ही एंजॉयड प्लेइंग फुटबॉल. ही नेवर ही कंप्लेन्ड. ही एंजॉयड. और उसके पास वो बैंटर था कि यार इनको तो मैं नटमैग करूंगा, तुम लोग मानो क्या ना हो. उसके पास एक पर्सनालिटी थी जो विनिशियस के पास अभी तक तो नहीं है. ये मैं इतना कह सकता हूँ. और रही बात, कम ऑन, लाइक ये कंपैरिजन में भी नहीं होना चाहिए. नेमार रिजेक्टेड रियल मैड्रिड बिकॉज ही न्यू उसको बेटर ऑफर्स आएंगे. विनिशियस एक्सेप्टेड रियल मैड्रिड बिकॉज उसको पता था कि उसके पास और बेटर ऑप्शन नहीं आएंगे. ओके, seagulls are here. There are two this time. Last time एक था. और नेमार ने एवरी हाउस होल्ड में अपना क्या बोलते हैं, एक इम्पैक्ट छोड़ा है कि यार विथ हिज हेयर स्टाइल, विथ हिज ड्रामेटिक फॉल, व्हाटएवर, लाइक एक इम्पैक्ट छोड़ा है भाई. विनिशियस का इज मोर अबाउट कंप्लेनिंग. या बट उसका भी पॉइंट है, रेसिज्म वगैरह. बट नेमार को भी बोला गया, बट he was like, I will rather answer him on the pitch. Simple. और नेमार ने like he made sure कि he's known only for football. हाँ, उसके आजू बाजू कंट्रोवर्सीज बहुत रहे, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर हम कलेक्टिवली देखें, नेमार was and will always be remembered as the most skillful person after Ronaldinho. ये इतना आप मतलब समझ लो, ये फैक्ट है. आफ्टर रोनाल्डिनो भी बोल दिया होगा, क्योंकि वो बंदे ने रोनाल्डिनो से सीखा है. उसका आइडल रहा होगा, जितना मैंने उसके बुक में पढ़ा है. नेमार में मैजिक था यार. आई कैन गो ऑन एंड ऑन अबाउट नेमार. मैंने नेमार का एक मलयालम मूवी देखा है. इट्स, कैन यू गेस व्हाट्स इट कॉल्ड? नेमर, लाइक नेमार एंड दे प्रोनाउंस इट एज नेमर. भाई वो देखा है मैंने. सो यू कांट, like I'm not competing with any other Neymar fans, but I feel कि ये ये क्या बोलते हैं, ये स्टेज अनलॉक करना बहुत मुश्किल है बाकी लोग के लिए. आई वुड से इट्स अ वेरी गुड मूवी बाय द वे. बहुत अच्छी मूवी है, देखो. इट्स आल्सो इन हिंदी, so feel free to watch. It's called Neymar. Okay, Aston Villa just scored. So they're leading. Okay, no goal.
VAR intervened and they disallowed the goal. Liverpool, Man City, Bayern, PSG, Madrid, all on the same side of the Champions League. Who will come out on the top? Uh, Bayern. Because they were second after us. और मैंने वो लोग का गेम देखा है. they they're very they're evidently an attacking side. That's for sure. बाकी सिटी वो लोग थोड़ा मतलब फंबल कर सकते हैं. रियल मैड्रिड के प्लेयर्स बहुत सारे इंजर्ड है. लिवरपूल का कुछ कह नहीं सकते. दे कुड आल्सो बी अ फाइनलिस्ट, दैट्स फॉर श्योर. पीएसजी का भी कुछ कह नहीं सकते. I don't know PSG. I've not been following up. I've not been watching PSG lately. So it depends on that day. अगर वो लोग अच्छा खेल रहे कि बुरा. Simple. और same. मेरे को I would have rather as an Arsenal fan I wanted to be on this side of the table. Sorry, on this side of the pot, because we know we can lose against top teams. That's okay. We might not play good. There could be plenty of reasons, but to losing to smaller teams, that's like a different pain altogether. And losing to a weaker team, that means like if even if you're playing good, that will be a different narrative. So वो फेस करना बहुत डिफिकल्ट है. सो आई रिमेंबर हम लोग जब लिवरपूल के अगेंस्ट खेल रहे थे एंड हम लोग सोबोस्लाई ने जो फ्री किक मारा था, दैट वाज प्योर ब्रिलियंस. सो एंड वी कांट कंप्लेन अबाउट इट कि हम लोग हारे बिकॉज नो वी प्लेड गुड बट वी लॉस्ट बिकॉज ऑफ मेयर ब्रिलियंस. ठीक है, सो वी एक्सेप्ट दैट. वी हैड टू एक्सेप्ट इट. बढ़िया. थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा हमारे लिए भी यार. हम लोग मतलब स्मॉलर टीम्स के अगेंस्ट थोड़ा अलग खेलते हैं. मतलब थोड़ा अलग मतलब वो लोग सेट बैक करते हैं, थोड़ा डीप खेलते हैं, तो हम लोग को क्रिएट करने में दिक्कतें आती है. Okay, good offside trap. Okay, do you see Arsenal beating Barcelona to the finalist? मेरे को लगता है बार्सिलोना का प्रॉब्लम हम लोग नहीं है. सॉरी, हमारा प्रॉब्लम बार्सिलोना नहीं है. बार्सिलोना का प्रॉब्लम है एथलेटिको मैड्रिड. आई थिंक अगर जो कोपा देल रहे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दो लेग में एथलेटिको वर द बेटर साइड. So we never know. Um, Atletico is and always will be a contender in the Champions League. दो लेग में वो लोग को हराना बहुत डिफिकल्ट है. बट या इवन लास्ट सीजन जैसे हुआ था, we were all hoping कि uh, we were hoping sir, even in the last season हम लोग होप कर रहे थे एथलेटिको मैड्रिड आए ना कि रियल मैड्रिड. बट देन आवर फैन बेस वाज लाइक नहीं, रियल मैड्रिड चाहिए हमको, एंड दे गॉट रियल मैड्रिड.
And after getting Real Madrid, we were like, okay, everyone were like, ये इनको तो मतलब हरा ही नहीं पाएंगे, बट या when there we won. Okay, first half. अरे 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 अरे. Okay, half time. Okay. Toughest away ground for Arsenal. Goddison एक है, but that used to be until last season, until this season. Now they play at some Dickinson Park. But yes, न्यूकासल वाला क्या था? सेंट जेम्स पार्क. वो एक बहुत डिफिकल्ट रहा है हमारे लिए, बहुत डिफिकल्ट. ऑल्दो वी वॉन दिस सीजन, बट बहुत डिफिकल्ट था हमारे लिए. मतलब रेगुलरली बहुत डिफिकल्ट रहा. और ओ सॉरी, एनफील्ड. एनफील्ड बहुत अ, मतलब विजिबली डिफिकल्ट है हमारे लिए. वी हैव नॉट वॉन देयर सिंस लाइक फॉर एवर. बट मेरा एक होप है कि मेरे को अपने छोटे भाई के साथ एनफील्ड में आर्सेनल वर्सेस लिवरपूल देखना है. दैट्स अ ड्रीम. बहुत मजा आएगा. एंड आई फील कि हम लोग वो गेम जीतेंगे, बिकॉज आई विल बी देयर टू विटनेस दैट मेमोरियल विन. और तो कोई ऐसे है नहीं. यस, सेंट सेंट जेम्स पार्क वही एक है डिफिकल्ट. Oh, bye, 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 bye. Mikel Arteta and Fabian Hosler were involved in a heated argument on the touchline after the goal. भाई होना चाहिए. ये मैनेजर्स में बैंटर वापस लाओ यार. दे टू सॉफ्ट. This generation has become too soft. Bring that banter era back. You know, we miss Mourinho. है ना कि नहीं? उसका वाला यार झगड़ा करो यार. एटलीस्ट ऑफ द पिच तुम लोग को झगड़ा कर सकते हो. मारो एक दूसरे को. कंप्लेन अबाउट स्कोरिंग कॉर्नर किक्स एंड फिर वापस स्कोर करो कॉर्नर. बहुत सारी चीज़ें थे बात करने लायक. सोशल मीडिया पे जो थोड़े बहुत सेव किए वो चीज़ों पे बात कर लेते हैं. Okay, I've already discussed about Nico Hover. So एक ट्वीट पढ़ूंगा मैं टेरी फ्लेवर्स का. Arsenal must be the only club in football that's been criticized for 15 years for not being able to win ugly or deliver when it matters. And then when they actually do grind out result in a title race, they get asked. Wapas, let me start it again. So let me read out a tweet from Terry Flivers. Arsenal must be the only club in football that's been criticized for 15 years for not being able to win ugly or deliver when it matters. And then when they actually do grind out result in a title race, they get attacked for that too. It's a no-win narrative, and that kind of inconsistency is what is killing the game. Spot on.
ठीक है। बीसीसी वाले भी थोड़े बायस लग रहे हैं यार। क्योंकि उनके एक आर्टिकल में अभी जब when लिवरपूल स्कोर्ड दोज मेनी लाइक कॉर्नर्स, उनके एक आर्टिकल का जो हेडलाइन है, इट वाज लाइक न्यू सेट पीस किंग्स, लिवरपूल कैन स्टिल अचीव समथिंग ब्यूटीफुल, नॉट बैड, there's nothing wrong in appreciating a top side. But again, when we, so that was before, like after we played against Chelsea, there was another article published by them. It's like ugly or beautiful. Set pieces prove decisive for, so, and like बीसीसीआई का एक और आर्टिकल था। ठीक है, मैं वापस चालू करना पड़ेगा ये चीज। सो बीसीसीआई वालों ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था। ठीक है, when Liverpool won against West Ham. New set piece, Kings, Liverpool can still achieve something beautiful. Not bad. They're appreciating top side. I don't mind. I don't care. Like, it doesn't bother me much. बट फिर बाद में वो लोग ने एक और आर्टिकल आफ्टर वी वॉन अगेंस्ट चेल्सी डाला, बोल के कि अगली और ब्यूटीफुल सेट पीसेस प्रूव डिसाइसिव फॉर आर्सेनल अगेन। इसका क्या ये क्या मतलब, ये ये बायसेस नहीं है भाई तुम्हारे। ठीक है, whatever floats their boat, क्योंकि at the end of the day Arsenal are and always will be the focal point. Yeah, we get them views, we get them clicks. If that strategy is, I'm a journalist myself, I know how these things work. Okay, if that thing is giving giving them like a like revenue, money, good for them. So that was like two tweets from x.com. But apart from that, इंस्टाग्राम पे तो सेव किए क्या मैंने। सो वहाँ यहाँ पे क्या, आर्टेटा इज द बिगेस्ट रेज बेटर आउट देयर, एंड आई एग्री। भाई जिस तरह से उसके पीछे पड़े सब लोग सारे, मतलब दे ऑल लाइक, हम लोग गूनर्स है, बट these guys are literally gooning because we're playing in a such a way, in such way. uh, और वो बोलता भी है, नेक्स्ट इंटरव्यू बोलता है हम लोग को और कॉर्नर मारेंगे। ये 10 मार रहे, 10 में से अगर हम लोग 6 मारने चाहिए, ये क्या बात हो गई। And which Arsenal player I miss the most? I miss Zinchenko. I so badly miss Zinchenko. उसका डिफेंसिव थोड़ा प्रॉब्लम था, बट आई थिंक he was the most he had the most IQ back then जब हमारे साथ था। Was the most smartest player out there. I miss him. वो उसके जो लाइन ब्रेकिंग क्रॉस, मतलब सॉरी, लाइन ब्रेकिंग पासेस थे, वो अनबिलीवेबल थे। एंड Arteta was so spot on with his pick, और उसने जो, आई थिंक, आई फील इट्स हिज पोजीशन, जो अभी जो इन्वर्टेड फुल बैक्स का जो आ रहा है ना, इट्स हिज पोजीशन।
वो सेंटर में आना ड्रिफ्ट होके और लाइक सेंट्रल एज एन एक्स्ट्रा मिडफील्डर खेलना वाज लाइक हम लोग को वो बैक देन वो समझ ही नहीं पा रहा था मैं कि ये भाई ये कहाँ से आ गया बट या नाउ आई नो दैट वाज द फाउंडेशन फॉर Calafiore. Now it's working out, but yeah, Calafiore थोड़ी ऑफ फॉर्म में तो चल रहा है. You know what's funny? Arteta is being compared to Tony Pulis और टोनी पुलिस खुद बोलता है कि हम लोग बोरिंग है. That's ironic to me. Way too ironic. ये मतलब भाई उसको बस एक पर्टिकुलर रीजन से तुम्हारे नाम से एफिलिएट किया है. ठीक है. You did not call his entire style boring. Okay, chill, chill, uncle. Okay. यहाँ से already we won. Oh, Chelsea is winning. Good for them. Who's the best football? Who's the best manager football has ever seen? Who is the best football manager? Who's the best manager football has ever seen? That's a tough question to ask. Uh, yeah, but I would go ahead and uh, say Sir Alex Ferguson. But I also feel Pep Guardiola should also be in the same sentence as him क्योंकि उसने मॉडर्न फुटबॉल को रेवोल्यूशनाइज किया है. इतना मैं मतलब कंफर्म कर सकता हूँ. द वे पीपल आर प्लेइंग उसी की द वे टीम्स आर प्लेइंग राइट नाउ इज बिकॉज ऑफ दिस डूड. आई मीन अर्थेटा, फिर कंपनी, फिर फर्गस अपना फर्गसन फैब्रिगास, फिर जावी. ये सब उसी के निकले हुए. इवन इवन टेन हाग एंड दैट या इवन टेन हाग. सो उसी के निकले हुए प्रोडिजीज है. एंड उसने लेगेसी ऐसी बिल्ड की है फॉर मोर मैनेजर्स टू जॉइन इन आफ्टर द रिटायर. और रही चीज सर एलेक्स फर्गसन ने, आई थिंक फुटबॉल इज नोन बिकॉज ऑफ दिस डूड, दैट्स फॉर श्योर. और उसमें कोई ऐसा मतलब कोई हेट नहीं कर सकता वो बंदे पे. वो टाइम अलग था, एरा अलग था. ही डिड व्हाट ही कुड एंड ही वॉन lot of uh, lot of top trophies. But at the same time, I also love Zinedine Zidane. इतना समझ लो बंदे ने मतलब consecutive trophies जीते and like you know that to UCL and then this is like टाटा बाय बाय. ये होता है एक मैनेजर भाई. वाना एंड इट ऑन अ हाई टोन, खत्म. बाकी मेरे को फर्क ही नहीं कौन कहाँ से कैसे. उसको लेगेसी वही है. Okay, second half is starting soon.
आई थिंक कोई पूछा था स्टार्टिंग में स्कोर प्रिडिक्शन। नहीं यार, ये सब में मैं स्कोर प्रिडिक्ट नहीं कर पाता यार। बट आई फील वी विल विन 3-0, 3-0 टू आर्सेनल। ब्राइटन ने सब्स्टिट्यूशन करा है। Why is Premier League so difficult than any other league? Premier League as a product attracts better players, and that makes it the most difficult league in the world. अगर आपके पास top players है, they will perform better than the rest. I don't think La Liga, ये सब ला लीगा में भी like 2-3 clubs है जो they can attract good players. PSG, Bayern Munich. So Premier League में if not six, there are like other um players that like other clubs that players are willing to play for. And why it's the most difficult because अगर आप देखेंगे चेल्सी की एकेडमी, आर्सेनल की एकेडमी, यूनाइटेड जो भी टॉप 6 की एकेडमी है ना, वो लोग ऑलरेडी बहुत अच्छा ट्रेन करते हैं। जस्ट दैट वो लोग फाइनल लिस्ट में वो उनके पर्टिकुलर एकेडमी क्लब वाले जो होते हैं ना, वो नहीं कर पाते। But that does not mean they're not Premier League quality. They do play for clubs like Crystal Palace, Brighton, Brentford, all these other clubs. So in a way, these top six clubs are like the ones making it so difficult. Simple. अरे रे, Mosquera, get up Mosquera. Premier League is also difficult because the level of physicality it holds. La Liga is more technical, tiki taka, uh, with space, like creating uh, and using empty space and all. Premier League is more like अगर like on average Premier League team क्या करती है, long ball, hoping striker, winger uh, receives that ball for, like or the best thing like अगर striker के पास आ रहा है तो शॉट ले लो, और अगर डिफेंडर के पास आ रहा है तो टैकल मार दो, कुछ तो कर दो। लाइक दैट्स व्हाई it's so tough to uh, अब इमेजिन करो न्यूकासल अभी बारसा के साथ खेल रही है। न्यूकासल लाइक 5 एट द बैक खेलेगी, और खेलने के बाद बार्सिलोना आएगी अपनी हाई लाइन पे, एक थ्रू बॉल डाल देंगे, एक 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 रन मैटर करेगा कि कौन सा रन ऑफसाइड ट्रैप बीट करेगा। ट्रैप बीट करने के बाद 1v1 खत्म, 1-0।
प्रीमियर लीग टीम्स अटैक का प्रेशर ऑब्जर्व करना आता है वो लोग को। मेरे को तो लगता है कि बार्सिलोना वर्सेस न्यूकासल इज अ डिफिकल्ट फिक्चर फॉर बार्सिलोना। बहुत डिफिकल्ट होगा, मेरे को तो लगता है, बिकॉज बार्सिलोना प्लेयर्स आर क्वाइट यंग। थोड़ा वो लोग को ये सब मतलब ये अवे स्टेडियम्स थोड़े समझ नहीं आ पाएंगे उनका एटमॉस्फेयर, तो दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। साका, ओ भाई 1-0 पे नहीं रह सकते भाई, वी हैव टू स्कोर। ओके ओके ओके, योकोरेस अच्छा खेल रहा है। मार्टिनेली थोड़ा ऑफ लग रहा है, बट आई थिंक उसका द रीजन फॉर हिम being in the starting lineup is because of his defensive work। उन वो लोग विंगर्स एक्सप्लॉइट करेंगे हमारे लेफ्ट बैक को, बट थोड़ा डीप खेल रहा है मार्टिनेली, आई कैन सी इट। Why do Premier League not perform well in the Champions League? भाई सिंपल है, दे Champions League sorry, why do not perform Premier League clubs not perform why do Premier League clubs not perform well in the Champions League? Simple फंडा, because Premier League teams जो है on a weekly basis they have to play tougher opponents, they have to face also tougher opponents in the Champions League, whereas other leagues में uh, उतना कंपटीशन नहीं है, इतना competitive atmosphere नहीं है। They can win a game with their substitutes, reserve squads, but Premier League teams need to play their best 11 against like everyone if they have to win. Okay, okay, let's go run. Yokeres, run. अरे 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 अरे, येलो दे दो भाई। गुड। Wasted set piece। भाई क्या डिफेंस पे आते हैं भाई। अगर हम पोजेशन लूज करते हैं, गुड थिंग, द बेस्ट क्वालिटी अबाउट आर्सेनल इज, अगर हम पोजेशन लूज करते हैं द एंटायर टीम फॉल्स बैक। इट शोज कि भाई हम लोग बस कॉर्नर एफसी नहीं है भाई, फुटबॉल इज ऑल्सो अबाउट डिफेंस। It's not always about, it's not, I know it's glamorous to talk about attacks and all, but
Football is also about defense. You have to appreciate uh, like our defensive unit as well, because times are changing now. क्या बोलते हैं, रॉड्री won a Ballon d'Or, so it says a lot कि कौन से मतलब कौन सी जनरेशन में हम लोग हैं अभी. जो ब्राइटन का 11 नंबर है ना, उसका नाम ओके, गुड स्प्रिंट फ्रॉम एनकापी. और यार चलो, अरे बैलेंस जीरो है भाई हमारे एनकापी का. मिंटे, यानकुबा मिंटे, जो ब्राइटन का 11 नंबर है ना, बहुत मस्त प्लेयर है. he's just 21 years old. मे बी अगर लिवरपूल को कोई साइन करना चाहिए ना, तो ये प्लेयर साइन कर सकते हैं लोग. इज टू क्विक. और आई रिमेम्बर द लास्ट टाइम he was he was playing against us, he almost scored like a banger. And hats off to David Raya, जो उसका राइट हैंड से जो सेव निकाला, क्रेजी. बट या, बट अगेन he's a quality player. Do you think US will be a good host country for the World Cup? No political questions, please. अरे यार यूकोरेस, good recovery. अरे साका, क्या फ्लो फुटबॉल है भाई. Good ball, Yokeres. Tough run for Saka, यार. Man City drawing against Nottingham. Let's go. Let's go. Okay, I hope they just keep the scoreline same. Bye. तुम लोग को पता है, एज एन आर्सेनल फैन मेरे को बहुत गुड सेव,
गुड क्लियरेंस टिम्बर। एज एन आर्सेनल फैन हम लोग को बहुत बुरा लगता है जब हम लोग कंसीड करते हैं, बहुत बुरा। हम लोग अगर 4-0 अब भी है और लाइक वी कंसीड लाइक 1 गोल 4-1, बहुत बुरा लगता है भाई। एंड दैट्स द लेवल ऑफ मेंटालिटी आर्टेटा हैज बिल्ट ओवर द इयर्स। और प्लेयर्स भी विजिबली बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं अगर मतलब वो लोग कंसीड करते तो। मेंटली वो लोग प्रिपेयर्ड हो गए भाई। बट ये लाइक ये सीजन हम लोग को नैरेटिव था कि लाइक एक वन नॉट नॉट इवन वन शॉट ऑन टारगेट, फिर बाद में फिर भी कंसीड करने लग गए। एज एन आर्सेनल फैन बहुत हर्ट हुआ ये चीज़ भाई। हम लोग मतलब एक्सपेक्टेशंस को यहाँ तक लेके गए डिफेंसिवली, फिर बाद में इमीडिएटली हम लोग एंड मोमेंट में ड्रॉ हो रहे थे या कंसीड कर रहे थे। ये डेविड राया थोड़ा इंजरी करते हुए, मेडिकल हेल्प लेते हुए। ओके योकोरेस, दैट्स इट, या good decision to uh, substitute him for Kai Havertz, and also good decision to substitute Martinelli. Martinelli, pro, मार्टिनेली का जनरेशनल रन यूसीएल में रखा है। That's his tournament to shine. Premier League is for Trossard. My guy Kai Havertz is here. मैंने कमेंटेटर्स को म्यूट पे रख दिया है because I know all commentators are biased against Arsenal. They have their personal agenda against Arsenal, that's for sure. ये लोग मुझे कन्विंस नहीं कर पाएंगे कि दे आर नॉट। ओह भाई, risky from Mosquera. Okay. Let's go. Good defensive work, Subimendi. Good ball from Trossard. Saka was a bit slow to get there, but दो defense थे. Who is someone Arsenal might sell at the end of the season? पता नहीं. I love my players. I wouldn't want any of my players to be transferred. But अगर है तो it's a very tough question. Declan Rice, engine हमारा. Who is someone Arsenal might sell at the end of the season? हमारा like recruitment strategy is not about selling players. हमारा recruitment strategy is more about developing players. And oh, good save from Raya.
Trossard on the attack. We got a corner. Calafiore is here. Okay, my guy Calafiore is coming on. अभी देखते हैं. Oh, Mosquera is leaving. Good, good, good. थोड़ा it's good for his. Like जितना बहुत अच्छा किया Mosquera ने. जितना like 62, 63 minutes था बहुत अच्छा. But yeah, he's too young to understand the Premier League level yet. But eventually, जैसे इसका क्या बोलते हैं, गैब्रियल का पाथवे था, वो भी ऐसे ही था, सिमिलर डिफेंडर था. नाउ लुक एट गैब्रियल हिमसेल्फ, लाइक बहुत कॉर्नर चिकन. I think Nkapi will play as a centre back. Who is someone Arsenal might sell at the end of the season? I don't want any of my players to be sold. I love all my players. I think हमारा recruitment strategy ऐसा है कि we develop young players and sell to the other Premier League clubs. Maybe Lewis Kelly could be sold, uh, but he's also very young. Like he's a future, but he could go on loan. Uh, जैसे नवानरी का वैसे मतलब जा सकता है. Let's go Kayavaz. Kayavaz, let's go. Oh, tough luck from Kayavaz. Left foot पे था यार, should have scored. भाई डिक्लन राइस मतलब क्या इंटरसेप्शन कर रहा है भाई. Easy, easy. But yeah, who is someone Arsenal might sell at the end of the season? I think if we don't win any trophies, Saliba should just leave to Real Madrid. We'll just take 100%, sorry, 100 million for him. Baki, uh, Declan Rice will probably not leave because उसको इंग्लिश कंडीशन पसंद है. और कौन, Martinelli could be sold for like 50, 60. मार्टिनेली भी एक अच्छे क्लब के लिए जा सकता है जो काउंटर अटैकिंग फुटबॉल खेलती है. आई वुडंट वांट हिम गॉन. आई लाइक दिस प्लेयर. ये बंदा टॉप प्लेयर है. आई वाज रूटिंग फॉर हिम व्हेन Aubameyang was playing as a striker. I wanted him to play as a striker instead of Aubameyang. So I hope he stays with us for like until forever. जुबीमेंडी ने जो फेशियल किया है थोड़ा वियर्ड लग रहा है. मुस्टैच रखी है और ऐसी दाढ़ी रखी है.
और कार्टून लग रहा है। चिटू थोड़ा हाइट छोटी है और लाइक विद दैट फेशियल कॉमेडियन तो लग ही रहा है। टिम्बर भी बहुत ब्रिलियंट है आज। टू गुड। भाई एक और मारना चाहिए यार हमको, नहीं तो हमको हार्ट अटैक भी आ सकता है। सारे आर्सेनल फैंस को ऐसे नहीं रह सकते हम लोग। Ooh, shot. Good block by, I think, Declan Rice. ब्राइटन अच्छा अटैक कर रही है, बहुत अच्छा अटैक कर रही है। Oh, Welbeck is here. Former Arsenal player. Welbeck is here. Glory to him. अरे रे। How much money will you accept for Declan Rice to be sold? Over 100 million. But I don't want him sold. भाई वो हमारा इंजन है, we are nothing without him. सी उसने साइन ही 100 मिल किया है, 100 मिलियन वाला साइनिंग है, और नो वन इज टॉकिंग अबाउट हिज साइनिंग अमाउंट। एंडो, कैसाडो, ये सबका मतलब लोग, इवन इसाक, वर्ड्स, सबका मतलब पूछते रहते हैं कि यार आर दे रियली दैट मच वर्थ। नो वन टॉक्स अबाउट डिक्लेंस वर्थ, क्योंकि वो बहुत बहुत क्रेजी लेवल का परफॉर्मेंस देता है। और लाइक आई एंजॉय हिम, आई एंजॉय वाचिंग हिम प्ले। If anyone wants to go pro as a midfielder, I would give an example of Declan Rice. Be like Declan Rice if you ever want to go professional as a midfielder. Mario Trossard. यार अटैकिंग थोड़ा वीक हो रहा है यार, लेफ्ट हैंड साइड में। वी डेस्परेटली नीड अ प्रॉपर विंगर। ट्रोसार्ड अच्छा है, मार्टिनेली भी अच्छा है। मार्टिनेली लेफ्ट विंग बैक बहुत बहुत मस्त प्लेयर बनेगा, बट वो रोल अभी फिलहाल तो एग्जिस्ट नहीं करता प्रीमियर लीग में। इट डज, बट आई फील इट्स लाइक an old position to play at. Oh, foul there, nice.
Was it offside? Nope. But a close call could be offside. नहीं नहीं. Who is winning, Chelsea or PSG in the Champions League after what happened in the Club World Cup final? Oh, I forgot about that one. Oh yeah, Chelsea does have an edge over PSG, but but that tournament as a whole is more about, it's like a preseason, So I wouldn't judge someone's entire thing in that. अरे ट्रोसार्ड, what the ट्रोसार्ड भाई, ये सब नहीं. Good ball from Timber, by the way. ये सब नहीं ट्रोसार्ड. Who is winning, Chelsea or PSG in the Champions League after what happened in the Club World Cup finals? Yes, Chelsea did beat effortlessly in the Club World Cup final. They do have an edge. I feel, मेरे को लगता है चेल्सी जीत जाएगी, बट पीएसजी का कुछ कह नहीं सकते. डेम्बेले इज लाइक अ डिफरेंट. खाजावाटेलिया वो भी अलग मॉन्स्टर है. बारकोला. उनका पीएसजी का डिफेंस थोड़ा वीक है, इतना मैं बोल सकता हूँ. मिडफील्ड भी अच्छा ही है पीएसजी का, बट इट डिपेंड्स यार. कोल पार्मर का दिन है तो मतलब यू एक्सपेक्ट इट टू बी फुल ऑफ गोल्स अगर कोल पार्मर का दिन है तो. जाओ पेड्रो भी अच्छा खेलता है. Chelsea versus PSG also depends on who's playing first. Who's playing where? सो चेल्सी वाला जो मैच है, ओके, पेरिस का होम है ना पहले. हाँ तो पेरिस हार जाएगी, ये लग मेरे को लगा. दैट्स व्हाट आई फील. क्योंकि स्टैमफोर्ड ब्रिज में द बेस्ट रिजल्ट फॉर एन अपोनेंट इज लाइक अ ड्रॉ और लाइक अ 1-0 विक्ट्री. से ज़्यादा नहीं मार सकते. चेल्सी विल ट्राई टू स्कोर एज मेनी गोल्स एज possible. Simple. मतलब in the first leg. Nottingham City 2-all. How? Okay. Football's back. Crazy. Chelsea's winning 4-1 against Aston Villa away. Wow. United is also losing to Newcastle. Whoa, 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 whoa. A lot is happening. Crazy. Can you check if it's offside or like this VR check or like if the goal is confirmed or not? Can you please check? It stands. Crazy. Crazy, crazy. Let's go. Ayari is also good. Okay, Christian Norgard is coming on. Maybe he'll replace Zubimendi. Maybe. Because Declan Rice is a monster and is playing really good. Declan Rice को देखने का मजा ही है भाई.
हमारे टाइम में मिडफील्डर्स कौन थे टू टू एडमायर? प्रॉब्ली लुका मॉड्रिच, क्रूज, जावी, इनिएस्टा, नो? बट डिक्लन राइस, ऐसा लगता है कि हम लोग इसके जैसा बन सकते हैं। ये जावी, इनिएस्टा वगैरह is they're like on a different level. We can't even have that skill set. Casemiro scored equalizer 45 plus 9 minute. ये क्या बात हो रही है भाई? 9 मिनट क्या होता है? व्हाट इज 9 मिनट्स? वो भी फर्स्ट हाफ में। इनक्रेडिबल। इन why is Casemiro still relevant? मेरे को वो समझ नहीं आता। नो हेट बट नो ऑफेंस प्लीज। माइकल कैरिक सुप्रीमेसी आई गेस। Newcastle won, United won. Oh God. Oh God. They got a red card. Ramsey got a red card. Oh God. Newcastle is on a red card. Ah, tough luck. Tough luck. United will probably win. I think that's why they got 9 probably for that red card check. Arsenal, please score. Can't live like this. That's a silly yellow card to get. Boscagli. Boscagli. Cha, 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 cha. सर जी ये सेटअप का कुछ करना पड़ेगा। मेरा लैपटॉप गर्म हो रहा है। अरे 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 अरे। कार्डियोग्लू। कार्डियोग्लू। What a cool name. Cardioglu. भाई मार दो यार प्लीज। गोल मार दो भाई आर्सेनल। मेरे से और नहीं, ये लास्ट के 10 मिनट 1-0 पे मैं नहीं रह सकता। ये मेरे हार्ट के लिए अच्छा नहीं है। तुम लोग मार दो और फिर इट्स गुड फॉर माई हार्ट। आर्सेनल कंसीडिंग एट द एंड मिनट। हम लोग कंसीड किए प्रीवियसली।
I hope not. I hope we don't concede. I hope we sustain this lead. डेविड राया शॉट लेते हुए उसके बॉक्स से. Okay, who's the viewer? Can you please just say hi? Whoever the viewer is, please say hi. मेरा तीसरा व्यूअर जो भी है प्लीज हाय भेजो. हार्ट्स नहीं हाय भेजो सर. आई नीड टू नो कौन हो आप. मे भी कोई अरे चला गया. वाह. Here comes the money. Good recovery, Declan Rice. Let's go. Ah, wait. Declan Rice. Okay, that's a foul. Dobre. 1-0 पे नहीं रह सकते भाई. लास्ट 5 मिनट्स स्पेन. मारो यार मारो. मैं तो मैं मेरा मेंटल हेल्थ डिपेंड करता है इस स्कोर पे. प्लीज मारो यार. क्यों किसी को. अरे 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 अरे, काय हुआ. अवेयरनेस दिखाओ यार. Yes, Brighton have been a better team. They played. They attempted 11 shots, three on target. We attempted only six and one shot on target. हमारे मैं पहले भी बोला था ये अवे फिक्चर हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट रहा है. यहाँ पे जीतना बहुत मैटर कर रहा है करेगा. अ, भाई इज इट ऑफ साइड. फ्लैग स्टेज डाउन. काय हैवर्ट्ज ने खुद ही शॉट लेने का डिसीजन लिया. कोई बात नहीं. थोड़ा मेसी हो गया था बॉक्स में. could have been very close offside होने का. but I would take that as a
good, like corner is also good. अगर वो close margin से ऊपर बैंक करो, ऊपर, बढ़िया. There's a reason why they are professionals, and I'm here watching professional those professionals. मैं उनको क्या ही बताऊँ. मारो एक कॉर्नर से गोल मारो प्लीज, मजा आ जाएगा. I do feel it. Be what I be, what I be, what I want it. I'm gonna do what I want. ब्राइटन का जो कीपर है, he looks like Florian Woods. They they two look way too similar. Maybe that's where he disappeared. It's better for him if he changed positions. Okay, we are officially in the 90th minute. Let's see how many minutes are added on. City is still 202. है ना? Who's the third viewer? Yeah, can you please say hi if you're joining this call? Sorry, if you're joining this live stream, can you please say hi or like, okay, ooh, I think I've covered it all. I think I've covered it all. Okay, how many added minutes added on? Let's see, let's see, let's see, let's see. Let's go, Saka. Go for it. Go for it. 7 minutes added on. Wow. क्या करेंगे अरे रे 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 रे. Okay, got a foul. Arteta looks furious. I mean, I think Arteta and Welbeck, did they ever play together? And they were when Welbeck was at Chelsea. I'll have to check that out. Let's see. Welbeck left Arsenal when? अरे 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 अरे. He left in September 2014 when Arteta Arteta joined Arsenal which year? 2011. So I think they those two played together. I mean, imagine one is a manager and one is still playing. Uh, क्या ही बात थी. I mean, if they imagine if those two were like really close friends and this guy was like complaining, and if Mikel Arteta was complaining about uh, Welbeck for whatever for XYZ reasons, and like when they go home and they talk about such things and they'll have a chat about it, probably laugh at it off the field.
Okay, good clearance. Easy. Whoever the third viewer is, like, can you just wave, like, do something? Hi, hello. Are you a football player? Are you my friend? जो भी तीसरा व्यूअर है, हाय भेजो यार. Ooh, ooh, good defense. Someone is. भाई मारो यार. गुड ड्राइव. अरे रे 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 येलो. अरे यार. बट आई थिंक वहां पे पेनल्टी बॉक्स में किसी का तो हाथ लगा है. कुछ तो हुआ है वहां पे. एंड आई एम अफ्रेड of whatever that situation is. Okay, no problem. Good to go. Oh, bhai, it's too stressful at this point. Everything is going in Arsenal's favor. I mean, they don't say it like that, yaar. Don't be naive, yaar. If you can't support us, at least don't hate us. अगर कुछ अच्छी बातें नहीं कर सकते हमारे बारे में तो बुरा भी मत सोचो यार. प्लीज. हम लोग ने हमारे स्ट्रगल्स हमको पता है. वी वर नोन एज द फोर्थ क्लब इन द प्रीमियर लीग. फ्रॉम देयर नाउ वी आर कंटेंडर्स इन ऑल कॉम्पिटिशंस. हम लोग कहीं तो पहुंचे है भाई. उस बात का रिस्पेक्ट करो यार. Okay, Brighton got a free kick. Okay, okay, okay. Ah, wasted opportunity from Brighton. सिटी के रिमेनिंग मिनट्स कितने हैं? Probably shift to that one after this. Final six. Okay, great. Let's go. Okay, we have won. Let's go. We take this victory. Because हमारे लिए भाई ये स्टेडियम ये अवे फिक्चर बहुत डिफिकल्ट रहता है हर बार. And Declan Rice was amazing. I think Gyökeres was also nice, but उसके फेवर में नहीं जा रहा था. I'm sad that we didn't score from set piece, but I'm also happy that we scored from an open goal for the banter fans.
What else? What else? David Raya, defensively, we were too strong for Brighton. We were like हम लोग clearance ला निकाल रहे थे, aerial duels win कर रहे थे. What? Really? I think I'll have to shift. Okay, where is Liverpool? Sorry, not Liverpool. Come on, go live. Okay, it's 2-all finished, right? Crazy, crazy. Okay, who scored Samayo? Samayo is scoring in every game. That's a good thing. That's like a proper winger attacker you should be having in your team. I'll have to check that last minute clearance. Okay, Samanyo. Okay. Ooh, how did they miss it? Ooh, by respect to Nottingham Forest for not conceding that goal. Love you. Okay, should be it for today. Was a good. Okay, this jersey gave me a bit of luck. I don't want to jinx it. Thank you for watching. My top two followers. Thank you for staying with me for 2 hours. Means a lot. I'll be live next on. Uh, I think it's the Champions League night. Let's check. I'll be live next on Wednesday at around 11:15. It's an early fixture for us, so we're playing against Bayer Leverkusen. So I'll be there. Thank you guys for watching. If you're a player, if you want my help as an agent, please feel free to reach out. Do come watch my live stream. I want I want to connect with you guys. Hope there are more viewers next time. In a way. Bye bye.